The topic we are going to discuss about is liquids, and the subtopic is hydrogen bonding. First, learn about the structure of water. Let's consider structure of water. Oxygen is more electronegative than hydrogen. You all know. So, one is electronegative, other would be electropositive. तो इनमें dipole forces present होनी चाहिए. But with water, the scenario is different. Oxygen के पास दो lone pairs होते हैं. Hydrogen के पास sufficient partial positive charge है. Both hydrogen atoms create strong electric field due to small size. Oxygen atom will form a coordinate covalent bond with neighboring hydrogen atoms. So चूंकि ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर्स थे, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. अब ऑक्सीजन जो है वो अपने दो लॉन पेयर्स जो है वो नेबरिंग हाइड्रोजन एटम को डोनेट करेगा और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा. सो इन द फर्स्ट स्लाइड में सेट के वाटर जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों आंसर रखता है, इसीलिए उस पर डायपोल फोर्सेस होनी चाहिए. बट इन द नेक्स्ट स्लाइड वी लर्न कि ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर्स होते हैं, वो नेबरिंग हाइड्रोजन को डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है. सो अब उस वो फोर्सेस कौन सी डेवलप होंगी? The electrostatic force of attraction between partially positively charged hydrogen atom and an electronegative atom is called hydrogen bonding. अब इसको dipole forces नहीं कहेंगे. अगर we have hydrogen atom particularly और उसके साथ कोई एक electronegative element attach है तो उसे हम कहते हैं hydrogen bonding. So electronegative elements can be oxygen, fluorine, neon or rarely chlorine. That's why HCl is a boundary case. Let's see hydrogen bonding in HF. Hydrogen bonding in HF is weaker than H2O. It is due to the fact that F can form only one bond per molecule. Electronegativity difference पे depend नहीं करेगा इस केस में. It will depend कि वो कितनी bonds बना रहा है per molecule. जो कि हमारे पास सिर्फ एक फ्लोरीन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, इसलिए ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब वो वीकर होती है इन HF. Next is hydrogen bonding in ammonia. Ammonia can also form one bond per molecule as it has one lone pair of electrons and nitrogen. So nitrogen के पास सिर्फ एक lone pair होता है, तो वो lone pair डोनेट करके हाइड्रोजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करता है. Next, the strength of H bonding is 20% less than that of the covalent bond. So it is about 80% equal to the covalent bond. जबकि जो dipole forces थी वो just 1% थी. ये 80% है of the covalent bond. Let's discuss a question. The strongest H bond is in HF, OH, and H, OF. And the correct option is HF क्योंकि यहाँ पे electronegative difference are. This was all about the hydrogen bonding. I hope you have understood it well. And thank you so much.